Hi, good morning, everybody. I hope you all are doing good. Good morning to everybody. This is Lacuna Astro's official channel, and here we talk about astrology. If you have any specific questions related to your Kundali, you can use this time to ask that question. My name is Anand. I'm the founder and CTO of Lacuna Astro. Today is Sunday, so we can extend this session for 2 hours if needed, but that is totally dependent on your enthusiasm. I'll be available to you for next 1 hour. Feel free to use this as an opportunity. Okay, guys, feel free to use this wonderful opportunity. I'll be a bit occupied doing a few things, experimenting with a few things. If anybody is interested, let me know. I'll be I'll be just helping you with the reading. On this channel, there are very specific rules. If somebody has violated that rule, then obviously that person would no longer be allowed to be here, right? And get benefit of our services. So some of the folks I see that they try to message, try to reach out, but guys, rest assured, mm, you are not going to get my attention. So better you go somewhere else, seek and advice somewhere else. I would not be able to help you. Because somebody, if violates the rule once, they are most likely to violate the rule again also. So that's their true nature, right? So nature never changes.
So guys, on Sundays the sessions are conducted a bit longer. अगर आपके पास अपना कोई विशेष क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. I'll be a bit occupied. I'm just finishing some of my pending activities. But as part of my commitment, I'm available to you. Feel free to use this as an opportunity. Most of you already know that we are working on releasing a new feature, and that is called yearly reports. And that yearly reports work is it has reached to a logical conclusion. So maybe in a week's time we should be having all the necessary predictions, remedies for 2026, which is very specific to your kundli, available out there in the market for you. So I would still request you. We were earlier planning to release it on 1st of December, but it got extended. It got extended a bit, but now we are reaching to a point where we can comfortably say that yes, we can at least have pretty accurate predictions. A couple of things which we tried to make sure that are absolutely correct. That includes the basic calculations, right? So when the sun is moving, when exactly it comes to the same sign, same degree and all that, right? So that calculations are now working absolutely fine. Apart from that, we were also trying to make sure that the code is also calculating the monthly transit of the sun. Since at Lacuna Astro we are not using any third-party APIs or any third-party services, now it becomes our responsibility to make sure everything is built with best of accuracy possible. So that is what we have done. Hi Dream Life, how are you doing? So with best of that, we have built a considerably strong system now. So if anybody has any questions, they can ask, and I would be more than happy to answer their questions. It's a session where we talk about astrology, so if you are not sure what are we doing here, so just to let you know, this is a very dedicated session for that. So if you have any questions, any details, you can share. If you want, you can download the Lacuna Astro application. That is our product. It's freely available on App Store and Play Store. You can just go there, download it, and once it is downloaded, you can share it with us.
So most of you already know that there are means over the weekends, right? We do not function. Obviously, the live sessions would continue. That is something which I do, but my team is not available. So any orders, anything which you have placed recently, as recent as on Friday, so that will be fulfilled on Monday. So the order would leave our facility on Monday. So I would say have patience. Order would be leaving our facility on Monday. This live session, during this 1 hour, we are just going to talk about your kundli. So if you have any specific ask, you can share that and we can just look into it. Hey, hi Soumya Ranjan, how are you doing? How is everything in Orissa?
Okay, guys, just I'm a bit distracted. I'm just closing one of my items. Meanwhile, I'm available. If you have any questions, feel free to ask. Hello, Mr. Shankar. How are you doing? Okay, good. So, guys, I'll quickly talk about what we have been building for you, right? Um, so, when you download the Laguna Astro application, right, you get to see this specific interface, and this interface comes when you create your profile. After the creation of your profile, you basically get to see all these options. That includes your 2026 prediction also. So you can go and use that and see if that is of any use for you. Obviously, I want to explicitly call out that this is something which is very generic in the sense it is based on ascendant. So anybody who is belonging to that ascendant would get to see the same predictions. When it comes to very specialized readings, we are offering you two ways in which you can get that. One option is through your yearly reports. So yearly reports are currently being worked on. ये आपको हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि विद इन अ वीक आपको ये दे दें, लेकिन इट्स टेकिंग अ बिट टाइम क्योंकि इतना सिंपल नहीं है, और हम आपको एक जनरलाइज रिपोर्ट नहीं देना चाहते. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में दो लोग धनु लग्न के हैं तो दोनों की रिपोर्ट सेम ही है, तो क्या फ़ायदा क्या है उस चीज़ का. सो दैट इज़ वेयर वी वांट टू मेक श्योर व्हाट वी गिव यू इज़ वेरी particular to your chart, your kundali. And for that we are introducing this yearly report. ये जो yearly reports हैं ये आपको
बिफोर 2026 स्टार्ट्स विल मेक श्योर इट इज़ अवेलेबल। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता था कि ऑन 1st ऑफ जनवरी द ऐप वुड बी एंटायरली फ्री। एंटायरली फ्री का क्या मतलब है? एंटायरली फ्री का मतलब ये है कि 1st ऑफ जैन को जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं दे विल रिमेन फ्री फॉर हाउ लॉन्ग इज समथिंग वी नीड टू सी, मे बी for half a day or for a full day, maybe for just 2 hours at 12 a.m. So that is what we are going to do, but definitely there would be a window in which the application would be entirely free. So what do I mean by free? There are certain areas where you require to have coins. Coins का use क्या है? So if you have coins you can go and ask these questions. So आप जब भी अपना account first time create करते हैं तो जो आपको यहाँ पे 9,90,000 कॉइन्स दिख रहे हैं, यू बेसिकली गेट 100 कॉइन्स एज अ ऑनबोर्डिंग बोनस। आप उस ऑनबोर्डिंग बोनस को यूज़ करके कोई भी 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज जस्ट 49 कॉइन्स। ओके, हेलो मिस्टर देवराज, हाउ आर यू डूइंग? सो आप उन कॉइन्स को यूज़ करके अपना Okay, Devraj, just hold on. Let me see that. I'll quickly explain what I was covering. आप यहाँ ऐप को डाउनलोड करिए, अपने ऐप को डाउनलोड करके अपने क्वेश्चन को आप यहाँ पे आकर के पूछ सकते हैं। वी हैव देवराज हेयर। देवराज का चलिए क्विकली कुंडली बनाते हैं और देखते हैं कि ऐप किस तरीके से आपको हेल्प कर सकती है। ऑब्वियसली ऐप वही टेक्निक यूज़ करती है जिसको आप जाकर के कहीं किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करके आप जानते हैं। द सेम टेक्निक, द सेम लेवल ऑफ इन डेप्थ एनालिसिस एप्लीकेशन ऑल्सो डज। लेट्स क्विकली सी हाउ इट इज़ बीइंग डन। सो अभी देवराज हैं हमारे पास, देवराज ने अपनी डिटेल शेयर की हैं। हम इनकी कुंडली को दोनों तरीके से देखेंगे, ऐप में भी देखेंगे और अलग से भी देखेंगे, ठीक है। सो लेट मी क्विकली क्रिएट हिज प्रोफाइल। देवराज, आपकी प्रोफाइल मैं क्रिएट कर रहा हूँ। इसका ये मतलब है कि आप इस कुंडली को अपने पास नहीं देख पाएंगे, बट आई कैन डू वन थिंग। अगर आप अपना ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोनों जगह उपलब्ध है, वहाँ डाउनलोड करने के बाद आप अपना जब प्रोफाइल क्रिएट करेंगे यू विल गेट टू सी द सेम डिटेल्स जो यहाँ मैं अपने पास देख रहा हूँ। So as long as you do so, you will have the full clarity on this. अभी हम quickly देखते हैं कि what is there for you. If you go here, Bikaner. We had one of our clients from Bikaner. August, 9th August. Time is 7:45 p.m. परफेक्ट। परफेक्ट। सो देवराज का कुंडली यहाँ पर रेडी हो चुका है। देवराज का प्रेफरेंस हिंदी है। सो देवराज, आप इतना ही सिंपल है प्रोफाइल क्रिएट करना। जैसे मैंने अभी प्रोफाइल ओपन किया, आपकी डेट ऑफ बर्थ डाली, प्लेस ऑफ बर्थ डाली, टाइम डाला। अगर आप अपना प्रोफेशन, अगर वर्किंग है तो प्रोफेशन आप अपडेट करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है जब आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी यूज़ करते हैं, क्योंकि मोबाइल न्यूमरोलॉजी में आपके प्रोफेशन को यूज़ करके आपके लिए ये स्पेसिफिक सजेशन दिया जाता है कि किस तरीके का नंबर कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। ये चीज़ें मैं लाइव सेशन में यहाँ पर नहीं यूज़ करता हूँ, क्योंकि मोबाइल नंबर आपका एक्सेसिबल होता नहीं है। तो ये आप खुद कर सकते हैं।
आप ऐप को डाउनलोड करिए, मोबाइल नंबर ऐड करिए, ऐड करके अपनी रिपोर्ट जनरेट करिए. इट विल टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दिस इज़ एग्जैक्टली द डिटेल विच यू पे हैफ्टी मनी फॉर. लेकिन यहाँ फ्री में अवेलेबल है, तो आप जाइए उसको यूज़ करके देख सकते हैं. देवराज का प्रोफाइल बन चुका है. लेट्स गो एंड सी. इफ़ यू गो एंड सी देवराज प्रोफाइल, if you see Devraj's profile, it is available here. Devraj, can you confirm if everything is right? देवराज जरा जल्दी बताइए if everything seems to be all right. अगर सब ठीक है तो we will proceed further. Okay. Devraj started his message saying that new subscriber. Yeah, I mean, the very first thing he said is a false information. But anyways, so this is Devraj's profile. Now go and look for job. So his question is, मेरा राजस्थान सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम है, सिलेक्शन होगा क्या? 5 अप्रैल को है. सो देखते हैं व्हेन विल आई गेट जॉब. जब हम व्हेन विल आई गेट जॉब वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछेंगे, सो इट सेज दैट कि द पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिस इवेंट इज़ मिक्स्ड. इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि ये जो आंसर आया है ये आपके 1 साल के होराइजन को देखते हुए आया है. Hey, hi Martin, how are you doing? How are you doing man? Long time no see. So ये जो आंसर है ये 1 साल के होराइजन पे है, जहाँ पर हमें आंसर ये मिलता है कि ये पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिस इवेंट इज़ मिक्स्ड. तो पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिस इवेंट, लेट्स डू वन थिंग, इसको हिंदी में करते हैं क्योंकि ही वॉन्ट्स टू सी दैट इन हिंदी. सो देवराज की प्रोफाइल को हमने यहाँ पे क्वेश्चन को अब हम हिंदी में पूछेंगे. ठीक है. सो ये हिंदी में इनका आंसर है देवराज का. एंड इन हिंदी वी कैन सी दैट कि इनके पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट, द क्वेश्चन ही हैज़ आस्क्ड, इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि अप्रैल में इनके एग्ज़ाम है वो क्लियर होगा या नहीं होगा. सो देवराज यू कैन सी कि आपका ये जो पूरा साल है, इस पूरे साल की अगर मैं बात करता हूँ, जिस दिन आपने क्वेश्चन पूछा है उस दिन से 1 साल तक के होराइजन को देखा जाता है, और उस 1 साल के अंदर कौन सी दशा फेवरेबल है, कौन सी दशा फेवरेबल नहीं है, उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट दिया जाता है. यहाँ हम देख सकते हैं कि जॉब मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो मिश्रित है. मिश्रित होने का मतलब ये हुआ कि मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है. मिलेगी कब, कब नहीं मिलेगी, या किस किस समय में आपको मिलने के चांसेस अच्छे हैं, किस समय में मिलने के चांसेस नहीं हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे. सो अगर आप अनुकूल दशाओं की बात करेंगे तो अगर आपका एग्ज़ाम, हाय विकास, अगर आपका एग्ज़ाम 11 फ़रवरी से लेकर के 5 मार्च के बीच में है तो निश्चित तौर पे चांसेस बहुत अच्छे हैं जिसमें आप अच्छे रिज़ल्ट की उम्मीद कर सकते हैं. लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम 5 मार्च से लेकर 9 अप्रैल के बीच में है, ठीक है, देन द चांसेस ऑफ हैविंग अ कन्विंसिंग रिज़ल्ट इज़ नॉट देयर. तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि आपका जो टाइम फ्रेम है जिसमें आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो दैट इज़ समथिंग फॉलिंग आउट ऑफ द ब्रैकेट ऑफ दिस. तो आपका जो एग्ज़ाम देने का टाइम है वो इससे थोड़ा सा बाहर है. तो आप मान के चलिए थोड़ा सा
रिजल्ट्स को लेकर के आई एम नॉट दैट पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा मैं पॉजिटिव नहीं हूँ आपके रिजल्ट्स को लेकर के. सो दिस इज़ व्हाट इज़ द सजेशन फ्रॉम आवर साइड. नाउ इफ़ यू वांट टू डू सर्टेन रेमेडीज़, तो सारी रेमेडीज़ यहाँ पे लिस्टेड हैं कि कौन कौन सी रेमेडीज़ आपको ट्राई करनी है. आप उसको जा कर के ऐप में देख सकते हैं. ऐप डाउनलोड करिए, क्वेश्चन को पूछिए, यू विल गेट द सेम आंसर. जो आपको यहाँ पे मिल रहा है वही आंसर आपको भी मिलेगा, देवराज. सो प्लीज़ गो and use this as an opportunity to get your answers. Yeah, a lot of people ask, a lot of people believe in this, so why not you? So जाइए अपना क्वेश्चन पूछिए. किसी का भी क्वेश्चन हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क. ये एप्लीकेशन का नाम है लकूना एस्ट्रो. ये ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोनों जगह उपलब्ध है. अगर आपके पास कोई भी अपना क्वेश्चन है तो आप जा कर के वहाँ पर पूछ सकते हैं. इन केस आपको वहाँ पे आपका क्वेश्चन नहीं मिलता है तो आप लाइव में आइए, मुझसे पूछिए. आई विल आंसर दैट. आई विल ऑल्सो मेक श्योर कि वो क्वेश्चन ऐड कर दिया जाए आपके लिए. इन फ्यूचर आप जब भी आएंगे तो आपको मिल जाएगा. ठीक है. हाय यूनिक वन, गुड टू सी यू बैक. आई एम गुड यूनिक वन. आप कैसे हैं? परफेक्ट. ठीक है. इट इज़ दैट सिंपल. सो यहाँ पर आपको जो आंसर्स दिए जा रहे हैं, आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई वन थिंग कि यहाँ जो आपको आंसर्स दिए जा रहे हैं, जैसे अब आपके मन में डाउट होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं. एक कंपनी है जहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनके साथ आप जाकर के चैट कर सकते हैं. ठीक है. हाय समर्थ, गुड मॉर्निंग. आप उनके साथ जाकर के चैट कर सकते हैं. या so we are also quite busy and occupied. So मेरा कहना है कि लेट्स अज्यूम एक कोई कंपनी है जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स उपलब्ध हैं. आप जाइए, उन एस्ट्रोलॉजर्स के साथ चैट करिए. तो चैट में आप उनसे पूछेंगे सर मेरी जॉब कब लगेगी. बिल्कुल विवेक, वी कैन सी दैट. आप अपनी डिटेल शेयर करिए, क्वेश्चन शेयर करिए, एंड विल इमीडिएटली लुक इनटू योर कुंडली. आप जाते हैं उन एस्ट्रोलॉजर्स के पास, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, वो आपको कुछ आंसर देते हैं. क्या आपने कभी उनसे पूछा कि ये आंसर आप किस बेसिस पे दे रहे हो? किसी ने भी नहीं पूछा होगा ना. और अगर आप पूछोगे भी तो उनके आंसर्स शायद ही आपको समझ में आए. तो हमने यहाँ क्या किया है लकूना एस्ट्रो में कि हम आपको रीजनिंग भी बताते हैं. ठीक है. हम आपको रीजनिंग में ये बताते हैं कि ये आंसर बेस्ड किस चीज़ पे है, क्या है हमारे आंसर के पीछे का सारांश. इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि ठीक है, देयर इज़ समथिंग विच इज़ यूज टू कैलकुलेट दिस फाउंडेशनल आउटकम, राइट. एंड दैट इज़ व्हाट वी शेयर विद यू. या सो आप इसको यूज़ करिए. दिस इज़ अवेलेबल टू एनीबडी एंड एवरीबडी. आप जाइए, अगर आपको कोई डाउट होता है, आप ऑफलाइन मुझसे बात करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको बुकिंग का ऑप्शन भी मिलता है. आप जा कर के अपना एक स्लॉट बुक कर सकते हैं मेरे साथ, एंड देन वी कैन हैव अ डिस्कशन अबाउट इट. बट आई वुड से कि बिंदास यूज़ करिए. दिस इज़ so reasoning is also given, and that reasoning is extremely detailed. आप उस रीजनिंग को जाकर के किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ वैलिडेट कर सकते हैं. राधे राधे सुयोग जी, राधे राधे, कैसे हैं आप? इस रीजनिंग को आप जाकर के किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ, किसी भी प्रकांड पंडित के साथ आप जाकर के वैलिडेट कर लीजिए. अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं इस पे, तो आस्क देम टू रीच आउट टू मी. I would love to talk to them. But anyways, this is available to you, and you can just go and try this. Now we will go to Vivek. We'll go to Mr. Vivek. विवेक की प्रोफाइल बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा. मान लीजिए विवेक ने ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड किया. तो फर्स्ट टाइम जब विवेक ऐप को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ डैशबोर्ड पर उनको सिर्फ एक बटन दिखेगा और मैसेज दिखेगा कि ऐप आपको क्या हेल्प कर सकती है. जब विवेक उस पर टैप करेंगे, उस बटन पे
to create his profile. Somewhat similar to this would open. यहाँ जाकर के विवेक अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे. तो अभी विवेक की प्रोफाइल मैं क्रिएट कर रहा हूँ. तो अब विवेक, मेरी तरफ से आपको ये सजेशन रहेगा कि आप जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए. सुल्तानपुर, वाओ. नाइनटीन 91. विवेक, आपने अपना टाइम नहीं शेयर किया है. सॉरी 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 सॉरी, विकास, आपने अपना टाइम नहीं शेयर किया है. विकास, यू हैवंट शेयर्ड योर टाइम. आपने अपना समय नहीं दिया है. हाँ सुयोग जी, बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हैं. सो गाइज, वी आर लाइव ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो. सो वी गो लाइव ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक and YouTube at the same time. So if anybody is watching us there, feel free to share your questions. So we are available on 3 platforms at the same time. रात के 10 बजे. विकास, प्लीज़ कंफर्म करिए इफ एवरीथिंग इज़ फाइन. विकास, अपनी डिटेल्स कंफर्म करिए. बाकी सब ठीक है. ओके, परफेक्ट. ठीक है, गुड. जस्ट होल्ड ऑन. विकास, इस ऐप को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं. एंड इफ़ यू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन, यू विल गेट everything what I just spoke about, right? जो भी मैंने डिस्कस किया है वो सब कुछ आपको एक्सेसिबल रहेगा. That all you can use for your benefit. Just give me a minute. अगर आपके न्यूमरोलॉजिकल चार्ट को देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन को इंडिकेट करता है. ये आप जाकर के देख सकेंगे. ऐप के अंदर भी आपकी पूरी लोशो ग्रिड क्रिएट हो जाती है. तो आप जाइए, अपनी लोशो ग्रिड को क्रिएट करिए. दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री. ये लोशो ग्रिड, आप जाइए, आप अपनी लोशो ग्रिड ऐप के अंदर देख सकते हैं. सो ये इंडिकेट करता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा एंगर इश्यूज़ होने चाहिए आपके अंदर. मैरिज ऑल्सो सीम्स टू बी अ प्रॉब्लम. फाइनेंस ऑल्सो सीम्स टू बी अ प्रॉब्लम. हेल्थ के भी इश्यूज़ आपको आने वाले हैं. Obviously, share market is not something which is
very good place for you to really grow, right? So आपको थोड़ा सा उससे दूरी बना करके रखनी चाहिए. हाय रोशन, जस्ट होल्ड ऑन. अभी हम लोग विकास के साथ हैं. विकास को एक बार कवर कर लें, उसके बाद आपके पास आएंगे, ठीक है? रोशन और मैसेजेस मत भेजिए, स्पैमिंग मत करिए प्लीज़, अदरवाइज़ आपका ही लॉस है, ठीक है? जस्ट होल्ड ऑन. तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है, इज़ व्हाट आई वुड से विकास. एज फार एज योर फाइनेंशियल्स आर कंसर्न्ड, आप जाइए यहाँ पर, and we do not have anything very specific to money, right? So पैसे से related specific यहाँ पर नहीं है. when exactly the condition of your finances would improve. हाँ, hold on. For that I need to separately look into your kundli. You are in Guru Mahadasha at the moment, and that has started. Oh my god. Okay, just hold on. Your Guru Mahadasha is started in 2014. How is your Guru doing? Just hold on. Vikas, are you wearing anything, any specific Rudraksh or anything which is very specific? Any stone, any Rudraksh, any bracelet, or doing any specific puja at the moment? Can you answer that, please? Okay, fine. Just hold on, guys. Just hold on. Give me a minute. Guys, just give me a minute. Perfect. Just hold on, guys. Just hold on. I'm with Vikas right now. Vikas का बस almost हो गया है.
विकास देखो 2030 तक आपकी ये दशा है, जो आपकी अभी करंट दशा चल रही है, एंड आफ्टर दैट योर सैटर्न का दशा वुड स्टार्ट. Now I would suggest you two things, right? If your budget allows, do two things for you, right? These two things, if you had your application you could see that there itself. बट आप अपने लिए एक मानिक और एक पुखराज, इसका कॉम्बिनेशन का रिंग बनवाइए, आप वो लीजिए. दैट इज़ समथिंग विच यू शुड वेयर, एंड देर इज़ अ वेरी स्पेसिफिक रुद्राक्ष विच यू शुड गो फॉर. अगर आप ले सकें तो सातमुखी रुद्राक्ष भी आप एक लीजिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको एटलीस्ट स्टार्ट करना होगा पुखराज से. पुखराज इज़ इनएविटेबल. अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी इतना फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं कर सकते, तो आप कार्नेलियन और सिट्रिन इसके कॉम्बिनेशन का एक ब्रेसलेट ले लीजिए, एंड दैट शुड ऑल्सो बी सफिशिएंट फॉर यू. लेकिन ये करना ज़रूरी है. इफ़ यू डू दिस इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू. अगर आपका मेटल एलिमेंट बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा ना, तो ये सारी फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी एंड अदर थिंग्स बिकम्स कंसिडरेबली बिग प्रॉब्लम. तो आप उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो बताया गया, आप इन दो चीज़ों पे काम कर सकते हो. एक्चुअल में मेटल एलिमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक एडवाइस नहीं दी गई है आपको बेसिकली अर्थ एलिमेंट और वुड एलिमेंट को इम्प्रूव करने के लिए बोला गया है अभी. एज लॉन्ग एज यू डू सो, that should give you a very good foundation. Once you start feeling more comfortable with the current lifestyle, then we can talk about more in terms of finances, कि आपकी financial stability को कैसे boost किया जाए. But if you try to do and achieve everything in one shot, then हो नहीं पाएगा. Even it will lead to problem. तो आप इस पे ध्यान दीजिए. मानिक और पुखराज, ये दो आप लीजिए, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कार्नेलियन और सिट्रिन का एक ब्रेसलेट ले सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू वर्क फॉर यू. उसके साथ साथ जस्ट गिव मी अ मिनट. या और ये सातमुखी रुद्राक्ष, ये तीन चीज़ें हैं आपके लिए. जस्ट कंसिडर डूइंग दैट, और बाकी बताइएगा जैसा भी है. और स्टॉक मार्केट से थोड़ा दूर रहो. हु इज़ नेक्स्ट? रोशन, आर यू स्टिल विद अस? We'll go to Roshan, then we'll go to movie house. We have Samarth also. Roshan, are you still there? Thank you, Roshan, for confirming. Just hold on. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए विकास. I'll give you something, just hold on. 2 मिनट रुकिए आप. विकास, ये जो वीडियो मैंने भेजा है, इस वीडियो को जाकर के देखिए और अपने रुद्राक्ष को चेक करिए. अगर आपका रुद्राक्ष वो कर रहा है जो मैंने यहाँ बताया है, तो आप उसको पहनिए. अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो आप उसको प्लीज़ गेट रिड ऑफ इट. देयर इज़ समथिंग रॉन्ग. तो आप उसको पहले जा कर के वैलिडेट कर लीजिए, और परेशान मत होइए उसको. आई मीन, जब भी आप रुद्राक्ष को पहनते हैं, इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम टू गेट एडजस्टेड विद योर ऑरा.
तो आपकी बॉडी के साथ वो एडजस्ट होने में, वो अपने आप को सिंथेसाइज करने में थोड़ा सा समय लेता है। तो इस समय में आपको पैनिक नहीं करना है कि आप उसको उतार के फेंक दें और कहें कि नहीं जी ये तो मेरे लिए काम ही नहीं कर रहा है। दैट्स अ वेरी प्योर थिंग, राइट, इट्स अ वेरी प्योर एनर्जी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उस एनर्जी को सही से समय दे रहे हैं टू गेट सिंथेसाइज्ड विद यू। नहीं देंगे तो यू आर ऑलरेडी मेस्ड अप, राइट। और उस मेस्ड अप सिचुएशन में इफ समथिंग इज ट्राइंग टू करेक्ट द करंट सिचुएशन ऑफ योर्स, देन देयर वुड बी फ्रिक्शन। वहाँ फ्रिक्शन होगा ही होगा। अब उस फ्रिक्शन को अगर आप झेल नहीं सकते हो तो आप क्या करोगे? आप फिर से वही बैक टू पवेलियन वाला सिचुएशन हो जाता है। सो आप थोड़ा सा उसको समय दीजिए, बट समय देने से पहले जो वीडियो मैंने आपको भेजा उसको जाकर के देखिए। देयर आई हैव एक्सप्लेन्ड कि हाउ एग्जैक्टली यू कैन चेक योर रुद्राक्ष, एंड दैट इज़ बिल्ड फॉर अ लॉट ऑफ कस्टमर्स हु, मतलब उनको फूल बनाया जाता है, राइट। उनको कोई आके बोलता है कि अरे नहीं नहीं आपका ठीक नहीं है, आप दूसरा ले लो। तो ये वीडियो इसीलिए है कि नहीं, आपको दूसरा नहीं लेना है, आपको पहले चेक करना है कि वो ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इफ़ इट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन देन ऑल वेल। नहीं काम कर रहा है देन ऑब्वियसली यू नीड टू कंसिडर चेंजिंग योर रुद्राक्ष। बट जाकर के आप चेक करिए एंड लेट अस नो। लाइव सेशन तो रोज़ होता ही है सुबह, आप आइए अपना क्वेश्चन पूछिए एंड वी कैन जस्ट look into that. Who is next? Next is our friend Roshan. We are going to create Roshan's profile. Roshan, ये काम आप खुद भी कर सकते हो। अगर आप खुद करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। There you get to see everything. Next time, for example, विकास जब next time आएंगे, मुझे विकास का कुछ भी आइडिया नहीं रहेगा, right, and that is pure waste of time, pure waste of time. I don't prefer that, but अब क्या करें, आप लोग डाउनलोड करने को तैयार ही नहीं हो। एक्चुअल में आप लोगों को करना चाहिए। करने से आपको अपनी प्रोफाइल का पूरा कंट्रोल रहता है। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट क्या करें। समस्तीपुर, yeah, that's fine Vikas, that's fine. I would suggest you to download the app and try. There are couple of things, couple of remedies available there which you can try. 21st November 2001, 6 AM. Okay, we have Roshan's profile available here, and Roshan, I would request you to please confirm if all the details are correct. Roshan, आप अपनी details एक बार quickly confirm करिए if all the details I have added are correct. अगर सारी details आपको ठीक लग रही हैं तो please जल्दी confirm करिए। ठीक है रोशन, थैंक यू सो मच। शादी कब होगी? मेरी लाइफ में वेल्थ, प्रोस्पैरिटी एंड हैप्पीनेस कब आएगी? क्या मेरा लाइफ में कभी सुख मिलेगा? ये हमेशा स्ट्रगल ही रहेगा? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। एक एक करके चेक करते हैं। सो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे आपकी मैरिज। फाइन, तो मैरिज देखने के लिए, एंड गाइज आई ऑल्सो वांट टू लेट यू गाइज नो कि यहाँ पे कॉम्पेटिबिलिटी रिपोर्ट भी है। इट इज़ द ट्रेंडिंग क्वेश्चन राइट नाउ, ठीक है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन का मतलब ये है कि हर हफ्ते मोर देन 1200 पीपल आर गोइंग एंड डूइंग देयर कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट। कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट में यू नीड योर प्रोफाइल एंड योर पार्टनर्स प्रोफाइल, ठीक है। आपकी प्रोफाइल और आपके पार्टनर की प्रोफाइल सिस्टम में क्रिएट करिए।
एक से ज़्यादा प्रोफाइल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कितनी सारी प्रोफाइल्स क्रिएट की हुई हैं। प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए ये प्लस वाले इस पे आइकॉन पे टैप करना है, जा करके अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। तो पहली चीज़ आपके पास 2 प्रोफाइल्स होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल, आपके पार्टनर की प्रोफाइल। इन दोनों प्रोफाइल्स को आप सेलेक्ट करेंगे। आई विल शो यू हाउ यू कैन डू दैट। सो अभी जैसे रोशन की प्रोफाइल हमने सेलेक्ट की हुई है। अब रोशन इज़ अ मेल, तो आपको यहाँ पे कोई फीमेल प्रोफाइल देखनी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द फीमेल प्रोफाइल आई हैव सेलेक्टेड। नेक्स्ट नेक्स्ट, डन। सो द compatibility टेस्ट इज़ एग्जीक्यूटेड बिटवीन बोथ ऑफ देम, राइट। एंड यहाँ पे 58% की compatibility है। कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनमें इनको स्ट्रगल हो सकती है, दैट यू कैन रीड हेयर। और ये एक्चुअल अष्टकूट मिलान के सिद्धांतों के ऊपर बिल्ड किया गया कॉम्पेटिबिलिटी रिपोर्ट है। ये कोई गिमिक नहीं है, ये कोई खिलवाड़ नहीं है कि आपको न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे कुछ निकाल के कुछ भी दे दिया और आप खुश हो गए और हम भी खुश हो गए आपको देके। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं किया गया है। इट इज़ प्योर एस्ट्रोलॉजी बेस्ड एनालिसिस विच इज़ एग्जीक्यूटेड फॉर यू। उसको कंडेंस फॉर्म में आपको दिया गया है कि हम भी जानते हैं आपके पास इतना समय नहीं है कि आप घंटों बैठ करके अपनी रिपोर्ट पढ़ें। सो वी हैव कंसोलिडेटेड जो अष्टकूट के 8 कूट होते हैं उनको हमने वेरी स्पेसिफिक पॉइंट में कंसोलिडेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो 3 एरिया हैं इनके लाइफ के, इनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है इन केस इफ़ दे टू मैरी टुगेदर, राइट। सो आप यहाँ सारी रिपोर्ट इसको पढ़ सकते हैं। It also covers saransh, right? Summary is also given there, and it also tells you the overall prediction whether you should go for this or not. So that you can go and check. But coming back to Roshan again, Roshan आपकी शादी से रिलेटेड हम देखते हैं। तो यहाँ विवाह के सेक्शन में आप जाएंगे। जिन लोगों को इंग्लिश पसंद है वो ऐप की लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाकर के आप लैंग्वेज को इंग्लिश कर सकते हैं। आप यहाँ विवाह में जाएंगे। तो अभी हम रोशन के लिए क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, मैं कब शादी करूँगी। सो यहाँ रोशन की प्रोफाइल यूज़ की जा रही है। एंड रोशन, इस साल आपकी शादी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हैं, ओके। सो द चांसेस ऑफ यू गेटिंग मैरिड दिस ईयर इज़ वेरी 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 लो, फाइन। Now coming to the time frame of 8th of May to 3rd of October, इस समय में अगर स्पेसिफिकली कोई रिश्ता आता है तो उस समय ख़ास ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये रिश्ते में अगर आप आगे बढ़ते हैं देन इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। बट ओवरऑल यू कैन सी कि इस साल आपकी शादी होने के चांसेस थोड़े कम हैं। और ख़ास तौर से 8 मई से लेकर के 3 अक्टूबर तक का जो टाइम है उसमें आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर इसको आप एनहांस करना चाहते हैं कि आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग मैरिड की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बढ़ जाए, तो उसके लिए आपको ये स्पेसिफिक यहाँ पे रेमेडीज़ सजेस्ट की गई हैं। आप उन रेमेडीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। टू सी द रेमेडीज़ आप ऐप को डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके अपने स्पेसिफिक क्वेश्चन को पूछिए, and you will get to see the answer, you will get to see the remedies also. Everything would be covered there. Fine. Now you had another question also. शादी कब होगी मेरी लाइफ में, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। सो देखो, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी के लिए कोई स्पेसिफिक यहाँ पर वो नहीं है, बट आई कंसिडर वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी एज पार्ट ऑफ द नौकरी, राइट। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अच्छी खासी वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाएंगे। सो फॉर दैट यू कैन गो एंड आस्क जॉब रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका जॉब से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं इन केस इफ़ यू आर नॉट वर्किंग एट द मोमेंट। बट आई वुड लाइक टू सी योर कुंडली सेपरेटली ऑल्सो। जस्ट होल्ड ऑन। योर टोकन इज़ QP। ये जो प्रोफाइल आप देख रहे हैं यहाँ पर रोशन, ये लोकली क्रिएट किया गया प्रोफाइल है और लोकल क्रिएटेड प्रोफाइल रिकवरेबल नहीं होते हैं। तो सेशन के बाद इसको हटा दिया जाएगा। आज का सेशन ख़त्म होगा, आपकी प्रोफाइल गॉन। तो अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट टाइम कि आपकी रीडिंग से जो भी रीडिंग की जा रही है वो आपकी प्रोफाइल के साथ बाइंड कर दी जाए,
तो आप अपनी ऐप को डाउनलोड करके अपना टोकन शेयर करिए हमारे साथ। वो टोकन आपको ऐप में ही मिलता है। टोकन लेने के लिए आपको यहाँ जाना है एंड हेयर यू कैन सी द लकूना टोकन, राइट। इस लकूना टोकन में आप इस पर टैप करेंगे, योर टोकन वुड बी कॉपीड एंड दैट एग्जैक्ट टोकन यू नीड टू शेयर विद मी and I can do the reading for you. Now looking at your LoshuGrid, it clearly indicates that there is a delay, but it is not that horrible. You are quite a soft spoken guy, काफ़ी अच्छे से बातचीत करते होंगे आप. So there are qualities also, but there are drawbacks as well. क्या करें उसके लिए we can make it work. We can find some remedies. Now we are looking at Roshan. Just hold on. What is your financial condition? Financial condition. Second house, Ketu is sitting there and Jupiter is aspecting. Jupiter is aspecting your second house. The lord of second house is Jupiter. And Jupiter is retrograde also, and it is not very strong. It's sitting in the enemy sign, obviously sitting in the 8th house. Okay, second house lord sitting in the 8th house. Okay, fine. It needs a bit of detailed remedy for you. Just hold on. I would request you to reach out to this number. Where is that number? Just hold on. Roshan, just drop a message here and also specify this token. Roshan, just drop a message and specify this token. We'll send you a few specific remedies to follow. Means those are a bit lengthy to explain. So just drop a message there. We'll send you the instruction sets and you can follow that. That is very much required. Otherwise it is I'm not very comfortable with your chart, so this is a bit concerning. Okay, movie house, are you still with us? शादी मैंने आपको बताया ना रोशन, आप अगर सही से सुनेंगे नहीं तो आई वुड नॉट रिपीट. ओके, आप यहाँ विवाह में जाएंगे रोशन, आपका भी ये क्वेश्चन अभी अभी पूछा गया है. सो इन द मैरिज इफ़ यू गो तो इस साल आपकी शादी होने के चांसेस नहीं हैं. ठीक है, नाउ इफ़ यू वांट टू नो व्हेन एग्जैक्टली इट इज़ गोइंग टू हैपन, सो जस्ट होल्ड ऑन. Shadi is absolutely delayed. Saturn is sitting in the 7th house. Sun is aspecting your 7th house. Wow. Venus is ruling your 7th house. How is your Venus? I can assure you one thing, your Kundali is not very straightforward. Venus is sitting in your 12th house and it's in the Jagrat Avastha.
Okay. Marriage is delayed and it is considerably delayed, Roshan. So I don't see that happening anytime soon. No. The only possibility, no, that is also not strong. No. 2033, there is a very thin possibility. Anything before that, I can't say that it is going to happen. That does not mean it would not happen. It means you need to definitely do certain rituals, certain remedies to reach to this point. Otherwise, it is not going to happen naturally. अब बाकी आप देख लो, हो जाए तो आके ज़रूर बताना. आके बताते हैं लोग कि नहीं हुई, तो आप भी मुझे जहाँ तक उम्मीद है यही बताओगे कि नहीं हुई. बट आई डोंट सी एनी नियर पॉसिबिलिटी विच इंडिकेट्स दैट. और इस साल तो बिल्कुल भी नहीं, चांस नहीं है. So that you can see on the screen. What you can do next year, you can again ask this question in the app, because app में आप जिस दिन क्वेश्चन पूछते हैं उस दिन से लेकर के नेक्स्ट 1 ईयर तक के होराइजन पे अगर कोई भी विंडो दिख रही होती है तो ऐप कैलकुलेट्स दैट एंड टेल्स यू. बट यहाँ इस स्पेसिफिक केस में ऐसा नहीं है. वी डोंट सी दैट पॉसिबिलिटी देयर. So Roshan, it is not going to happen. And even if I look at your chart separately, तो separate analysis के अंदर भी यही दिखता है कि नियर बाई कोई भी विंडो नहीं है. इवन 2033 तक कोई भी विंडो नहीं है. अब आप उसको देखिए. आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू हैपन एनी टाइम सून. आने वाले 6-7 साल में तो नहीं है भाई. हो जाए तो बताइएगा. और ये आने वाले 6-7 साल हम आज से देख रहे हैं. आप अगर शादीशुदा हैं पहले से और आपने कुछ कांड कर दिया, जो कि पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, आप ऐसा कर सकते हैं, वेयर यू वुड हैव ऑलरेडी गॉट सेपरेटेड एंड ऑल दैट. बट ऐसी कोई चांस है नहीं अभी तो 2001 बॉर्न हो आप, तो बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत है नहीं. बट ऑब्वियसली डिलेड है. 2033 तक कोई भी चांस नहीं है. थोड़ा डिलेड है मैरिज. आप उस चीज़ को ध्यान में रखिए. नाउ आई मूव ऑन टू मूवी हाउस. अभय पांडे. पांडे जी, मिस्टर पांडे. गुडी गुडी गुडी. इट इज़ 100% एक्यूरेट. शादी होगी. नहीं जी, ये बिल्कुल गलत है. इट इज़ 0% एक्यूरेट. Roshan, now you're crossing your boundary. I am telling you one thing, that in this year, right, and if you look at the next year, the window is not there, right? Window for marriage is not there. Now still, if you go ahead and do, please go ahead and do, but that would not survive. So when you say it is 100% accurate, as far as the mathematical calculations, as far as the graha dashas are concerned, yes, it is not there. If you still make it happen, I would like to know. जब हो जाए तो आके बताना.
नहीं हो तो ये 100% एक्यूरेट है। आप इसको गलत करने के लिए प्लीज़ आइएगा और हमें बताइएगा कि आपने बोला था नहीं होगी और मैंने कर ली। तो आप जब कर लें तब बात करेंगे इसके बारे में। इसकी एक्यूरेसी अब डिपेंड करती है इवेंट पे। और जब आप बोलेंगे कि मैंने कर ली है, आई वुड नीड 2 थिंग्स, शादी के फ़ोटोग्राफ्स कि आपकी शादी हुई है। सिर्फ आके यहाँ पर मोबाइल पे टाइप करने वाले आई नो अ लॉट, राइट? सो इफ़ यू क्लेम दैट कि द इवेंट हैज़ हैपेंड, 40+ में शादी होगी आपके हिसाब से। ओके, मूवी हाउस, लेट्स मूव ऑन। This guy is so much interested in marriage. Abhay Pandey. It is not going to happen before 2033. अगर वहाँ पे भी नहीं हुई तो शायद हो ही नहीं, तो आप ये ध्यान रखिएगा। उससे पहले हो जाए तो आप आके प्लीज़ बताइएगा। वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, हम यहीं पे ही हैं। अभय पांडे, व्हाट इज़ योर बर्थ लोकेशन? कानपुर, वाओ। Abhay, are you still with us? Two 2003. Okay. Abhay is 2003 born. I'm just creating his profile, guys. Hold on. 29th November 2003. Government job, or if there is any chance of other jobs, wealth and family happiness. Good points. अभी मैं आप लोगों को एक स्टोरी शेयर करता हूँ। आई टेक जस्ट 2 minutes. समबडी लाइक रोशन केम, राइट? रोशन की तरह एक बंदा और आया था, एंड देयर वाज अ प्रेडिक्शन कि इस साल उनकी जॉब का कोई चांस नहीं है। नाउ he continued to compliment कि yes prediction is right, yes, and later he said कि मेरा तो रेलवेज में हो गया है। मीन्स आई हैव गॉट दी सिलेक्शन लेटर फॉर रेलवेज। देन आई आस्क्ड कि व्हेन इज़ योर इंटरव्यू? देयर वाज नो आंसर। देन आई आस्क्ड if you don't mind, can you share that selection letter on our official number so that we can be sure? No answer. And that guy immediately ran away. Yeah, so that is exactly what I was telling कि आप आ सकते हैं, मोबाइल में टाइप करना is very easy and fake करना is very easy, that is absolutely fine. But what I'm saying कि when you say is it 100% accurate, ये तभी तक गलत नहीं होगा जब तक कि वो इवेंट या तो हो जाए या तो ना हो, जो भी प्रेडिक्शन है। सो जैसे अभी मिस्टर रोशन के केस में द प्रेडिक्शन इज़ कि मैरिज इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, ये तभी गलत हो सकती है प्रेडिक्शन जब वो कर लें। अगर वो कर लेते हैं तो आर सिंपल आस्क इज प्लीज शेयर द फोटोग्राफ्स, अदरवाइज हाउ वुड आई नो कि आप सच बोल रहे हैं? आई कांट ट्रस्ट जस्ट लाइक दैट, बिकॉज देयर इज़ अ सिस्टम विच इज़ बीइंग बिल्ट for the prediction. If you are asking a question saying that ki no, prediction is not matching, then you share the evidence why it is not matching. Otherwise you just simply come and say that ki no, it is not matching, and am I supposed to believe that? No, I would not. So that is where I have made it very clear. If you are saying, I'm saying no, job is not there, and you suddenly say that ki no, mera to isme ho gaya, तो आई वुड डेफिनेटली आस्क फॉर एविडेंस
share the evidence. I'll accept. If you don't share, then you are just a liar who is telling a lie. As simple as that. Fine. I was having a conversation with one of our clients. So, and he has मतलब उन्होंने लगभग 1.5-2 लाख के आसपास पैसे खर्च किए हैं, और बड़े बड़े लोगों से, जिन लोगों का 1000, 50,000, 70,000 जिनका रीडिंग चार्ज है, उन लोगों से उन्होंने रीडिंग भी ली है. तो ही केम एंड ही सेड दैट कि ये पता कैसे करें कि एस्ट्रोलॉजर, हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजर जो बता रहा है वो ठीक है या नहीं है. तो मेरा उनको सिर्फ एक ही आंसर था कि आप कभी भी, आप चाहे जितने बड़े साइंटिस्ट हों, आपकी चाहे जितनी बुद्धि हो, आप कभी एस्ट्रोलॉजर को गलत साबित ही नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वो जो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, वो प्रेडिक्शन लूप होल्स के साथ की जाती हैं. जो भी लोग कर रहे हैं यहाँ पे, वो करते क्या हैं. अब जैसे उन्होंने बोला कि भाई आपका एक्सीडेंट होगा 2026 मिड में, अगर आपको उससे बचना है तो आपको ये ABC रेमेडीज़ करनी होंगी. अब आपने की और आपका एक्सीडेंट हो गया, तो एस्ट्रोलॉजर क्या कहेगा? आपने सही से नहीं की होंगी. तब ये आर्ग्यूमेंट आ जाएगा. अब आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैंने तो बताया था कि नहीं होगा अगर आप रेमेडीज़ करेंगे. तो उस केस में कोई आता नहीं है वापस. बट इन केस अगर किसी ने की है और उसके साथ वो हो गया, तो आंसर आपको हमेशा ही मिलेगा कि आपने सही से नहीं किया. 101% यही आंसर मिलेगा. सम ऑफ द केसेस दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट कि अगर आप सही से नहीं करते हो. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बीकानेर का ही केस है, वेयर द पर्सन इज़ ट्राइंग टू क्रैक गवर्नमेंट एग्ज़ाम. उनका जो इमीडिएट नेक्स्ट इवेंट है वो मैरिज है. शी इज़ अ लेडी. उनका जो इमीडिएट नेक्स्ट इवेंट है वो मैरिज है, बट शी इज़ स्टिल बिहाइंड. नहीं, मेरे को तो जॉब करनी है. घर वाले शादी देखने में लगे हुए हैं, बट शी इज़ नॉट गेटिंग रेडी. एज बढ़ती चली जा रही है. जब वो 30 क्रॉस कर जाएंगी, तब उन्हें समझ में आएगा कि व्हाट शी हैज़ डन, who is on the losing side. But they are not getting ready. I'm not against कि उनको जॉब नहीं करनी चाहिए. I'm not against that. But what I'm saying कि अगर आप आए हो, आपको कोई चीज़ सजेस्ट की जा रही है कि this is the next best event which can happen with you, and marriage is the best event for her. So now what she has done, she has gone for a government exam. Chances बहुत कम हैं कि she will clear that. She failed in that exam. Now she is coming back saying that कि मेरा तो हुआ ही नहीं. अरे भाई, हमने तो आपको यही बोला था ना कि नहीं होगा. So what I'm saying कि you can't blame somebody. You have to. इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को आप तब यूज़ करिए जब something is extremely illogical happening in your life. First thing. Second thing, एस्ट्रोलॉजी में जो भी आपको रेमेडीज़ सजेस्ट की जाती हैं, वो रेमेडीज़ आपके सबकॉन्शियस के वाइब्रेशंस को करेक्ट करने के लिए की जाती हैं. क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस का वाइब्रेशन जब आपके कॉन्शियस के साथ अलाइन हो जाएगा, देन ओनली यू अचीव व्हाट यू अचीव. तो अगर आप उस वाइब्रेशन को अलाइन होने ही नहीं दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर वाज समबडी, राइट, विकास के पास आत्मकी रुद्राक्ष है. वो बोल रहे हैं कि जब मैं पहनता हूँ मेरे साथ बुरा होने लगता है. So that simply means कि his energy is so distracted, so much messed up, that the Rudraksha and his energy is having considerable friction, right, when he's wearing that. It happens with me also, right? For example, let's say if I put off this ring, right, I just put it off this ring and I just keep it separate somewhere. And now suddenly I come and I just wear it. It would give me extremely hell experience, right? I need to cleanse it. I need to make sure this has the positive energies.
then only I can wear it, right? And when I am putting it off, I need to make sure I am keeping it at the right place so that the energies are not distracted. There is a almirah just next to me which is filled with all stones, right? Now if I just keep that place dirty or keep dirty clothes in that, do you really think the stones would maintain their dignity? No. So the point I'm trying to make here is predictions done by anybody would never go wrong, because astrologers would find a way to say that नहीं नहीं हमने तो ऐसे बताया था, आपने ऐसा कर दिया, ये बताया था वो कर दिया. So whatever predictions you see here in Lacuna Astro, वहाँ कोई ह्यूमन बायस इन्वॉल्व नहीं है. वो सिंपल कैलकुलेशंस हैं जो आपको बता दी जाती हैं. दिस इज़ वॉट इज़ गोइंग टू हैपन, दिस इज़ वॉट नॉट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, and these are the planets which are not functioning in your favor. If you want, you can do the remedies for them. वहाँ कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, वहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपको कुछ चीज़ बेच दी जाए. सो दैट इज़ अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिडिक्शन विच इज़ गिवन टू यू. नाउ इट्स अप टू यू. कुछ लोगों का नेचर होता है कि दे डाउट ऑन एवरीथिंग, राइट? और उन लोगों की लाइफ हेल हो जाती है. आफ्टर मैरिज दे स्टार्ट डाउटिंग देयर पार्टनर ऑल्सो, राइट? बिकॉज वो ट्रस्ट का फाउंडेशन ही नहीं है, एंड दैट इज़ देयर प्रॉब्लम. उन्होंने अपने आप को इस लेवल पे स्पॉइल कर लिया है कि दे डू नॉट हैव द ट्रस्ट फैक्टर एंड दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू बिल्ड दैट फैक्टर विद एनी बडी. सो दैट अल्टीमेटली लीड्स टू अ प्रॉब्लम फॉर देम. इससे मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो नाउ गोइंग टू द मूवी अभय पांडे. अभय पांडे कह रहे होंगे यार कहाँ फंस गया मैं, ये आदमी मेरा काम नहीं कर रहा है, एंड ही जस्ट गिविंग ज्ञान. मिस्टर अभय का प्रोफाइल रेडी हो चुका है. अभय पांडे. अभय प्लीज़ एक बार कंफर्म कर लीजिए इफ़ ऑल द डिटेल्स यू शेयर्ड इज़ राइट. Perfect, Abhay. Thank you so much for confirming, and hats off to your patience, man. Nowadays, I don't know why, but I'm so much in love with Talvinder's songs. I heard that guy a long time back, but recently again I heard him again, and his songs are really good. Sprinkle, you can get that in your manage profile. Just go to manage profile, there you will get to see the tokens. Okay, let's look into it. What are your questions? Let's look into the job first. Abhay, if I go here and ask a specific question for you, and guys, I'm using my credit. So since I'm the founder and the owner of this application, I have liberty to have millions of coins with me, and that is what I'm using. So मुझे नौकरी कब मिलेगी? I'm doing this for Abhay right now, and when we go here and look into Abhay Pandey's possibility of getting this job this year, then we can see that starting from 5th of December, right? I mean, the time has started till 25th of December. If you are appearing for any exams, any interviews, the possibility of you cracking that is pretty high. So I am very positive about it. And now the okay, perfect.
So the good time is currently going on, Abhay. This is the favorable time for you. You can just use that window. Second best time for you is in 8th of October. No, that's not the best time. Okay, fine. But in 2027, do you know the exact month? Abhay, if you know the exact month when the exam would start, then I can just move to that point. App has a restriction. App always. Which exam you are targeting, man? Is it? Just give me a minute, guys. Okay. Is it related to CA or something? Throughout the year means UPSC. Yeah, that's fine. Just hold on. App has a restriction. It just looks into the horizon of 1 year. Earlier we used to look into 10 years time frame, but that consumes a lot of our compute capacity. And since our prices are extremely competitive, right, and nobody else can offer at this level of details at this price point, so that's why we had to reduce it. Abhay, I can say that there is a strong possibility of you getting into government job. That is there. Your numerological chart is quite complementary to that. It's complementing, and but there is obvious delay. So most likely, according to numerological chart, it may not happen in the very first attempt. Okay, so that does not mean you lose the hope. It means you increase the intensity of your efforts, right? Intensity of your efforts must be increased in order to see the benefits you are looking for. Otherwise, the numerological chart is not very much reflective to the side where I can comfortably say that ki ha must hai, first attempt you are all in. No, 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 that's not what we see here. uh, Now going to the astrological possibility, it is it is very much supported by your astrological chart. Even the Gochar is also supporting that. That is good. 2027 के time frame, and you are in Rahu Dasha right now. Okay. 2027 May. Somewhere in August, if your interviews or other things are conducted, the time seems to be quite favorable in 2027. But it will give you a lot of mental hassle. I am not very comfortable. I would say that the chances of you clearing it is very low. Very low. No. Yeah.
So Abhay, the chances of you clearing is very low, and there is a considerable delay also. It is not going to happen just like that. The next best slot I would suggest you to target on is in 2028. So the slot of 2028 is extremely favorable for you. There you can definitely see some positive outcomes, but the current slot is not at all favorable. So give your best, try your level hard, make sure you are comfortable. Yeah, see, I mean, this place, on this channel we don't try to bluff around, right? I My intention is to give you a black and white answer, right, which is boolean in nature, rather than तुम ये कर लो तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा. उसमें एफर्ट बहुत ज़्यादा है यार, और इतना तुम्हारे पास समय है नहीं कि यू कैन जस्ट गो एंड स्टार्ट spending 6 7 hours 8 hours in in puja part. That all you can't do. So efforts में आप सिर्फ इतना कर सकते हो. Just do one thing. Just drop a message on this number and share this token UPSC plus plus. Just share this message on this number. We'll send you a few practices you can follow, but I am not giving you a guarantee, right? It is just going to make sure that you are having a stable mindset. Right now your mind is going crazy. You would not be able to even concentrate on a certain point for a longer time. So there is one thing, if you want, you can, if you don't want to message, then I would suggest you to please have a आठमुखी रुद्राक्ष. आप देख लीजिए, you can get it from anywhere. You can order it from us also. आप उसको लीजिए, उसको पहनिए. That is the immediate line of defense you can create for you. Otherwise possibility of happening this event is pretty low based on the chart you have. So अब आप देख लीजिए how you want to do that. Okay guys, let's move on. Who is next? Sprinkle. And don't get disappointed, Abhay. You didn't come here to get disappointed. Okay? Use this as an opportunity to double down on your preparation. और यार एक चीज़ ध्यान रखो, millions of people preparing for that, right? ज़रूरी नहीं है सबका होगा, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सबका कभी भी हो जाएगा, है ना? ओके. Shelley, how are you doing? How are you? Means by far the best chart I have seen today. I would like to show you something.
Just give me a minute. So this is what I see here, right? This is the basic dashboard, right? This is the dashboard which I see for everyone. Yeah. Means it's a shrinked version, so you guys would not be able to see that. I mean, I see that you are constantly staying on our channel, but I see that your birthplace is not in India. So I would like to know, you are an Indian, or you were born and brought up there. And what's your question also? What's your question? What you want to ask? And please confirm, is this the correct date of birth and details which you have added here? Because I don't see multiple fives there. Obviously, there is one five, and your grid is very, very, very strong. Only one area which seems to be a bit of concern is relationship and marriage. Apart from that, it seems to be pretty stable. As long as your details are right. So, can you confirm if your details are absolutely right? Perfect, perfect. This is really good. Good to know that you are so much appreciative of our culture. What's your question? What exactly you want to ask today? Okay, that way you are saying. Okay, okay, fine, fine. But what's your question? Where you want me to help you? Yeah, so see, means your numerological chart was only indicating that area seems to be a bit of murky. But anyways, just hold on. I'm also creating this profile on my local system, since I want to try a couple of things here. And if you want, you can just app is available in US also, since you are using, and in-app purchase also works there. So if you want, you can just try that. Hello, Mr. Ankur, how are you doing? Just give me a minute.
Yeah, just hold on. I'll just look into it. Don't worry. So app is indicating that there is a very good possibility in 2026. So entire 2026 is filled with opportunity. Yeah. Um, so if you look at the 2026 horizon, starting from 15th of May till February 6th, right? The time seems to be quite favorable for you to find a suitable partner. So that is there. Just give me a minute. Yeah, that is also there, but let's do one thing, Shale. Let's do one thing. We can connect offline. This is the number you can use. I would love to speak to you. After the session is about to close, and then we can speak if you want. So this is the number you can have. Awesome, perfect. So let's connect offline on this, Shale, and don't worry about it. It is not going to be charged. I would love today is Sunday, right? So I'm just doing it for fun. My office is closed today, right? So we don't operate. Lacuna Astro would not operate over the weekends, right? But since I'm the founder, I love connecting with you all. I'll just cover Ankur, and then we'll close the session for today. And if you want, I can just so we can speak. I remember you. I remember you coming to our channel. I think long time back. I remember you came, and that time you also spoke about your partner being jailed and all that, right? So I remember you. We'll speak offline. Don't worry about it. And there is a possibility in 2026 seems to be quite favorable, and I think your relationship is also progressing in the similar direction, which is extremely favorable. And I am really happy that you are joining from US, and uh, we'll connect with you. We'll connect with you. Let me quickly check that. Perfect. I have received your message. Just after this, I'll call you. Hmm? I'll call you. Don't worry about it. We'll speak about it separately. Let me cover Samarth, and then Ankur, and then we'll close the session. Samarth, what is your question, Samarth? Have your parents found somebody for you? Last time when I spoke to your parents, they found somebody really good for you. But you were not getting ready to meet her. So have you seen her? And I also want to say one thing, that I remember you sharing one video. I saw that guy. I saw his channel, and I could see that he's quite vocal about relationship and other things. I would say ignore these things, right? A relationship is something which is built based on trust, right? So yeah, I remember you. I remember you. I have not forgotten
I have not forgotten about it. Yeah, good, good. So I would say that whomever they request you to meet, right? At least consider going and seeing that girl. And as I said last time, also be vocal about it. Be very transparent. Tell her what you want, what you are, and I'm sure girls like transparency more than anything else, right? Because they want somebody to trust them, and they also want to trust somebody. So, and that trust starts with transparency. So just meet that girl, whoever that is. I have spoken to you. You are a extremely nice guy, very well spoken, very mindful. So these are very good symptoms, and I'm sure you are going to do pretty good. Anything you wanted to ask, or you just wanted to share your token? Payal, you can drop a message on this number. Today is off. Uh, Today is off, Payal. So my team would not be there. But you just message. I also control that number, so I'll respond to you. You can place your order on that number, and whenever team is available, they will take care of it. So any new orders placed after Friday working hours, right, is something which is fulfilled on Monday. When is your exam? When is your exam, Samarth? Last time when we spoke, I think your exam was not conducted during that time, right? Has it happened? Ankur, I am creating your profile. Yeah, I know, but your question is slightly off track, right? Now I am asking, have you left that? I don't want you to leave that. Just continue preparing, and most likely you are going to get that. You have already done your LLB. Now you are focusing on that. So in any case, your career is definitely going to be associated with judiciary. That I have already said. Whether you would become judge or not is you becoming judge is very much possible. Your chart is very strong in that direction. The only point I want to make sure here is that your father also wants you to focus on his business. So he's he's really interested you becoming a judge, because being a father of a judge is a different um personality, right? uh, Different attitude, different exposure, but um, obviously let's not mix these two things. Yeah, that is fine, but when is your exam? February, March, UP, APO prelims will be there. Yeah, so just keep a focus on that. There is nothing else we can do a prediction for you right now. I would request you to give me the time frame when the exam is scheduled. Right now, starting from July 2025, extremely good dasha for you have started, right? And this is very favorable for job, and this is very favorable for marriage also. And that was the reasoning I requested you. And this dasha is quite long, but if you delay your marriage, that is
that is not a big deal. But obviously, you realize these mistakes when you go in your 50s, right? You come, your 50s start and your kids are still 5 6 years old. That means you are on a uh, very risky territory, right? So that is where the marriage should happen on right time, so that by the time you are old, your kids are grown up and they can take care of and fight back any critical situations. There is no other reasoning. So the primary and fundamental reasoning is that is why it is being suggested. So the time which has started from 2025 to July is extremely favorable for you for two things. One is your marriage, another one is your for job. Now I want you to come back to me when the dates are declared, right? uh, because me suggesting you something would not make government to schedule exam for you, right? No, that is fine, but that time were you doing the remedies I suggested? No, right? I think you have been doing the remedies now. I don't remember if you ordered or you are already having the other things which were suggested. I think you were suggested Saturn remedies, you were suggested Vidya Vikas Mala was suggested to you, and then clear quartz and green aventurine. So these were the things which were listed here. But I don't remember if these orders got placed. Yeah. So if you're not doing that, then definitely the vibrations would not be there, right? So the whole idea of these remedies is to give you that vibration which is necessary for you to be concentrated and not ask the similar questions again. So asking the similar question again means that wait for the time when the exam is there, then only it would happen. And obviously this time you are doing things with proper remedies and other things which will enhance the possibility of you cracking the exam. So if you are doing those things, rest assured you will get to see a positive outcome. If not, then तो मैं क्या बोलूँ भाई. Yeah. Okay. Ankur, are you there? If you are there, please let me know. So Samarth, please consider them. That is, they are very important for you. If you are doing well and good, just sit tight, wait for the right time, focus on your studies, don't get deviated. And if a good rishta comes for you, if somebody you see is matching your vibration and other things, please accept her. उसको डिले मत करो, अदरवाइज बहुत ज़्यादा डिले हो जाएंगी चीज़ें. And as far as exam is concerned, just wait for the right time. We have Ankur here. Ankur की क्या details हैं भाई? Hey Ankur, you have not shared your complete details, man. Ankur, you have not shared the details. Please share these details. Date of birth, place of birth, and time of birth. What is this? Just based on date of birth? Not possible. Half of it would go wrong. Welcome Samarth, welcome. Ankur, share your place of birth, time of birth, and date of birth. And do it fast.
Okay, okay, fine. Bulandshahr. 1994. October. 9th October. And guys, you can download this application. This is freely available and on App Store and Play Store. जो भी डिवाइस है आपके पास, उस डिवाइस पे जाइए, इसको डाउनलोड करिए, यूज़ करिए, अपने क्वेश्चन को पूछिए. अंकुर एक बार अपनी डिटेल्स जल्दी से कंफर्म करिए. Perfect. Ankur, that doesn't matter, yaar. I would request you to create your profile. I would request you to create your profile in the app. That is very much required, because if you do so, that will definitely. Yeah. Okay. Don't look at that 38%, Shali. I would request you to look for the areas of concern, right? Most likely, the areas of concern may be related to your progeny, right? Ability to produce child together. So if you are seeing things which are a bit concerning in that area, I think it doesn't matter, yeah. Finding a partner is more important. As far as kids are concerned, we can discuss this offline, don't worry about it. And that was the reasoning I requested you to connect offline, because I wanted to get a little bit in details of your profile. अरे ठीक है अंकुर, उसका मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला अंकुर, बिकॉज दिस इज़ अ ऑफलाइन प्रोफाइल, राइट. और यहाँ हम बहुत सारी चीज़ें नहीं एनालाइज कर रहे हैं आपके लिए, तो वहाँ उसका कोई मैटर नहीं है, राइट. तो जब आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो मेक श्योर करिए कि आप सही डिटेल्स वहाँ पे ऐड कर रहे हैं. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ प्रोफाइल विच हैज़ द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, because some of the questions which you ask take your marital status or the relationship status as an input for the predictions, right? So make sure that the things which you are asking are based on certain right details. Right now your question has no relation with marriage, and that is why it is irrelevant. Perfect. Just hold on. So I can tell you one thing, Ankur, based on the dashas which we see here, right? It's clearly evident that it's clearly evident that you are not going to have any suitable times
this year where you can crack any exams. So let me look into the longer horizon. Just hold on. Happy Princess, we are almost at the end of the session. May I request you to come tomorrow, please? Arif, we are at the end of the session. Arif and Happy Princess. So Ankur, if I look at your chart, right, so even though you are married, you may not be having very good experience there. You may also be experiencing health related issues. That is also there. And if not, then you will definitely have some health related problems. Financial abundance. अरे बात फर्स्ट टाइम आने की नहीं है यार. हैप्पी प्रिंसेस. Okay, just stay. I'll cover you. Don't worry. Okay. So health can also be a concern, but your numerological chart is अच्छा अच्छा अच्छा, आप इसको ऐसे देख रहे हो. Okay. Okay. So health can also be concerned, but the good thing is your numerological chart is giving quite good indication in terms of possibility of you having a government job. So that is there, and financial abundance would be there. पैसे का इतना ज़्यादा कोई मारा मारी आगे जा कर के नहीं होगी, but this can bleed, right? Your money can bleed like anything. Yeah. ब्लीड का मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जांपल द केस यू जस्ट मेंशनड कि यू गॉट टर्मिनेटेड फ्रॉम योर करंट जॉब. इट मीन्स यू आर सर्वाइविंग ऑन योर मनी राइट नाउ. सो यहाँ पर पॉइंट इज़ वेरी सिंपल दैट ब्लीडिंग ऑफ मनी इज़ देयर. हेल्थ कैन ऑल्सो बी ए कंसर्न. Accumulation of money can also be a concern. Even though you are married, marriage would also not be going very smooth. So these things you need to keep in mind, which is there. Now coming back to the possibility of you getting the job. Just hold on. Make sure your wife is happy, man. As long as you make sure that the time currently going on is quite just hold on. Then I would request both of you to subscribe first. Ankur, look for a private job. Ankur, I would request you to look for a private job. If you are
even though your numerological chart is indicating that, and that is the reasoning I prefer combining numerology and astrology together, because numerological chart is not always true. So even though that is giving a very strong possibility, but that also gives an indication that you may have a considerably high temper issues, right? Anger issues would be there. So I would just suggest you one thing, that focus on private sector. You can also keep an eye on government sector, but possibility is a bit low based on your current dasha. Okay, so don't get disappointed. Who is next? Happy Princess, 2 person. Hey, please consider. What are your questions? 1984 टाइम देश, हैदराबाद तेलंगाना, शादी कब तक होगी और पार्टनर कैसा रहेगा प्लीज़ बताएं. ओके 1984 450. Are you both twins? Okay, 1989. Okay. Just hold on. No, fine. That's okay. You two would be the last one, and then we'll close the session. $1989. So for Seema, I can say that Seema, you can expect some good options for you starting from 7th of May 2026 till 30th of September. Yeah, 30th of September 2026. So during that time, you can obviously expect some good traction there. Okay. So this time is very favorable. During this time, 30th of September till 22nd of March 2027. During this time, if there are anybody who is coming, then please be a little bit more vigilant. Don't just blindly accept that. If you do so, then the chances of you falling in a wrong marriage is very high. तो थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखना है. The time, this time seems to be quite favorable, 7th of May 2026 till 30th of September 2026. If you look at your
LoshuGrid here, right, which is also created here in the chart. You can see this on my screen right now. It is also indicating that there is a considerable chance of no marriage also. So that can also happen, and you may also have quite a bit of anger issues, quite a bit of uh, means you may be good at speaking, but anger issues may be there. So I would say that next year you can just keep your eyes open, and if somebody comes, then be a little bit vigilant. If they are coming in the window where you have to be careful. That is predominantly starting from September 30th, 2026 till 22nd of March 2027. During that time, if you see somebody coming with an offer, be a little bit vigilant about it. But anything starting from May till 30th of September 2026 seems to be a good time. इस बीच में अगर कोई भी रिश्ता आता है, कोई भी आपको अप्रोच करता है, तो प्लीज़ कंसिडर दैट एज अ गुड साइन एंड proceed with that. That is most likely going to give you the best experience. Now, who is next? Arifa. And you guys can also download this application, okay? ये हैदराबाद में कहाँ भाई? चलो हैदराबाद में ही डाल देते हैं. हैदराबाद 84 ... You are in the risky territory. 84 20th September. (4:50 a.m.) Arifa, please confirm your details. No problem, Seema. You take care of yourself. I would request all of you to download the app. That is very important, because if you could have shared your token, it could be a lot more easier for us to do this, right? And all the predictions, all the remedies, all that you could see in the application. But now you are handicapped, right? You can't really do anything. After this reading, there is no association between you and me. We are disconnected. And next time when you come, I would not have any idea whatsoever about you, who you were. Why would I remember? Because the influx of these messages are pretty high. So remembering everybody is not practically possible. So the advice is that you guys should download, share your token, get your reading done with respect to your token. So this is Arifa's Kundali. So the good time or the possibility of finding somebody suitable has started from 22nd of October 2025. So starting from 22nd of October this year, the time has started, that has begun, and this is till 13th of June. Yeah, please download that and share your token, because with that token it becomes very easy, very good for us to really keep track of things.
Now if you see, the possibility of your marriage is also very high. The time which you see on the screen indicates that 22nd of October, it is already gone, right? We are in December right now, but starting from December till 10th March 2026, 10th March till 13th June 2026, 13th July, 13th July, 13th July to 7th of December. So this entire series of time frame is quite good for you. Yeah, so it is very favorable. uh, if something good comes for you, then please do consider. So the time frame ahead is very, very positive. Obviously, your religion would not allow a lot of remedies which are suggested here, because those are very specific to Hindus. So I would not talk about them. But you can download this application. The application gives you the potential remedies which you can try, and that is certainly going to help you. Now, just give me a minute. Okay. Yeah, so this is what you can do. Once the tokens are ready, you can share that token. Potentially, I can give you certain remedies which are quite neutral in nature. Your religion would not stop you doing that. That you can definitely try, but for that I would need your token. So once you share your token on our number, so this is our official number. There you can just drop it with your names and name and the token, and with the question also. We'll get it updated, and you can just see that there. I think we have reached to an end of the session today. It was really good and remarkable. I loved connecting to all of you. One thing I want to explicitly call out. Thank you, Arifa. Thank you so much. I look forward to that. One thing I wanted to call out today, guys. We are working on yearly reports, and 2026 reports are going to be available in the application very soon. These would cover. Now, next reading I'll do when you share your token, Arifa. Okay? Arifa, once you share your token, then we'll do the reading. I'm now closing the session. I just want to give the closing comments, and then we'll connect tomorrow. Tomorrow when you come, I would expect you to have your tokens ready. Okay? Now, what I was saying, that guys, we are working on yearly predictions. It is going to be available in the application very soon, and this is again going to be very focused, very precise, very much customized for you. It is not going to be generalized reading like others are doing. When I say personalized, it looks into your dashas, it looks into the transit of sun, it looks into the gochar, and it combines these details and does a very fairly accurate prediction for you. So the work is currently in progress. We are almost 70% done. So 30% work is still in progress. I'm very positive that within a week's time we should be able to complete it, and it would be available to serve you. And it is really going to be remarkable. You would have not seen anything like that before, and nobody would have done it. Obviously, a lot of things we are doing are being copied by a lot of people. That is absolutely fine, as long as everybody follows the same intention and tries to give you the best service possible. We have no problem somebody copying us. So with this message, I would like to close now, and thank you everybody for giving this wonderful opportunity to look into your cards. I loved talking to a lot of you. It was quite a lengthy session today, around 2.5 hours.
we have spent together, and the people who gave this wonderful opportunity to us to look into your charts. I appreciate their efforts, and I look forward to all of you to join us again on Monday. And if possible, please download the application, ask your specific questions, share your feedback. All of this really motivates us. And with this message, I would like to say thank you, everybody. Have a great day, have a great night. This is your host, Anand. I'm the founder and CTO of Lacuna Astro, a company which is committed for astrological predictions. And yeah, let's connect tomorrow. Thank you, everybody.